Alright, welcome to this landing page creation session, which is going to be a really important session for every Facebook marketer, for every online marketer. So in this session, what we are going to discuss is ideal customer avatar. Okay, ideal customer avatar. Now understand this. I see a lot of people, they starting a business and they don't know to whom they are selling. उनको मालूम नहीं है कि वो किनको सेल करें, right? So they don't even realize who is the ideal customer. Before doing anything, before starting to run any Facebook ads or any ad, before setting up anything, you need to ensure that you know about your ideal customer. Okay, you should understand this, your ideal customer. इसको मैं रेड कर देता हूँ, right? For example, if I compare this with any offline business, if you are let's say setting up an offline business, for example, you willing to set up a grocery store, okay, grocery store or a salon, right? For example, salon, okay, in a particular locality. In a particular locality, right? Now, before setting up the grocery store or your salon, you will first look at how many societies are there, like in your nearby areas, how many people are communicating, how many people are coming, how many people are visiting, right? So you already know all these things, the demographic, right? And over how many people commute there on a daily basis, and keeping those customer in mind, only then you will go ahead, right? सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हो तब जाके आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो अपना सैलून को, राइट? एंड टेक द डिसीजन कि हमें आगे क्या करनी चाहिए, right? So that you need to understand your customer avatar first, whether you should set up your business over there or not, right? So in the similar manner, in the online business, it is so much required that first you start with your ideal customer avatar in your mind. Okay, आपको वो ढूंढना है ideal customer avatar जो हैं आपके क्या होने चाहिए. So when we were doing the launch for our 10x job offer machine, let me write it over here. जब हम अपने So when we were doing the launch of our 10x job offer machine, basically 10x job offer machine is one of our product, which help job seekers to get job offer, right? तो जब हमारी इसकी launch हो रही थी, so when we were launching this particular product, before doing anything, before writing any single page of copy, before doing any sort of marketing, I made my customer avatar, right? So first of all, here is something what we have done. Okay, can you see this? Right? हम क्या करते थे, हम अपने कस्टमर के साथ बात करते थे, उनके प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते थे कि हमारे कस्टमर जो हैं वो उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कितने टाइम से जॉब सर्च कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. एंड देन आफ्टर व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, हम उनके हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे नोट डाउन करते थे. ओके, so that we can create a product for that particular stuff, for that particular person, and we can help them with our product, right? So this is the thing. Can you see this? You have no technical skills. उनके पास कोई technical skills नहीं थी. अभी nowadays आपको मालूम है कि चैट जीपीटी और AI टूल्स के आने की वजह से जॉब को काफ़ी खतरा है, ऐसा उनको लगता था, राइट? तो उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे हम AI टूल्स का यूज़ कर सकते हैं
ओके लिंक्डइन का पावर उनको मालूम नहीं था कि कैसे लिंक्डइन, बहुत सारे लोग जो हैं वो लिंक्डइन का यूज़ तो करते थे, बट later point of time they don't know the exact potential how to use it in order to get a job offer, correct? वो सारी चीज़ ट्राई कर चुके हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर चुके हैं, स्टिल दे आर फेलिंग टू गेट अ रिजल्ट, राइट? हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो काफ़ी आई एम न्यू टू दिस, कैन आई डू इट, कन्फ्यूज्ड हैं वो, राइट? मैं आई एम XYZ, विल दिस वर्क फॉर मी, I can't do this right now, I am already a part of another course, can I do this for me, can this will going to help me out, I do not have money this point of time, I'm a fresher, will this work for me, I want to switch my domains. Are you stuck in a job that does not make you happy, does not pay you what you are worth, and does not have any opportunities for growth? Not a single company got back to me, right? मैं बहुत कंपनीज़ में अप्लाई कर देता हूँ लेकिन कोई रिजल्ट रेस्पॉन्स नहीं आती है, मैं इंडस्ट्री चेंज करना चाहता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई कंपनी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, कि आप क्वालिफाइड नहीं हो बोल के रिजेक्ट कर देंगी, राइट? यू जस्ट डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ और करियर येट, यू फील स्टक इन एन अंडरपेड जॉब, आपको ऐसा लगता है कि आपका पोटेंशियल ज़्यादा सैलरी का है लेकिन आपको अंडरपेड किया जा रहा है. सो ये प्रॉब्लम कोई भी निश क्यों ना हो, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, आपको जानने की ज़रूरत है और आप तभी जान पाओगे जब आप अपने कस्टमर से बात करेंगे. ओके ये सारे प्रॉब्लम्स अराउंड कॉल्स करके, मैसेजेस करके, रिसर्च करके हमें जानने को मिले हैं, राइट? कि हमारी जो कस्टमर अवतार है उनकी बेसिकली ये प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं. सो अगर हम अपने प्रोडक्ट में इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, डोंट यू थिंक कि ये उनके लिए वैल्यूएबल होगा, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. In the same manner, you need to understand the offerings as well. What are all the offerings you can provide, right? Bonuses क्या आप ऐड कर सकते हो, CTA, exclusive offer, FAQ क्या हो सकती हैं, जब उनके ऑब्जेक्शंस को आप कैसे किल आउट कर सकते हो, तो उनका एज क्या है, उनका लाइक डिसलाइक क्या है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट? दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. Okay, coming to the point. So yeah, first of all, I gave my ideal customer avatar a name. All right, I talk about the customer, for example Rahul, just for an example, Rahul को हम as a customer avatar लेते हैं. What I will do is I will write down my customer avatar's name. For example, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, क्या वो फ्रेशर हैं, क्या वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं. ओके अभी जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके बताया है, राइट? कहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने टाइम से उनको जॉब ऑफर नहीं मिल रही है, कितना अभी उनका एज है, और कितने टाइम से वो जॉब सर्च कर रहे हैं, क्या उनका कोई ईयर गैप है, कौन सा इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं, किस फील्ड में वो जॉब सर्च कर रहे हैं, स्विच करना क्यों चाह रहे हैं, तो उनका फ्यूचर गोल्स क्या है, राइट? So I came to know that my customer avatar's age is between 22 to 30 and उनका फ्यूचर गोल ये सारी हैं और उनको ये सेट ऑफ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं. ओके नाउ आई केम टू नो ऑल दिस थिंग्स. So now when I know my customer avatar, when I know what are all the problems Rahul is facing particularly, I was better able to do the marketing just for that particular avatar, that is Rahul. Okay, मुझे राहुल के बारे में ये सारी चीज़ें अभी मालूम हो गई हैं. अब rather than thinking about lakhs of people around, thousands of people around who would be coming to my landing page, because if you thinking about everyone, you will not be able to cater one person. Try to understand this. If you thinking about everyone, you will not be able to cater one person. You need to cater that one person. If Rahul comes to my sales page or a landing page, then I need to ensure that Rahul goes and buy my product. Okay, Rahul goes and buy my product. हमें ये इंश्योर करना है कि हमें फॉर एग्जाम्पल हमने कस्टमर अवतार बनाया हुआ है राहुल के लिए, राइट? और राहुल को ये सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है और हम वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं
और लैंडिंग पेज में हमने अच्छे तरीके से चीज़ों को बताई हुई हैं, तो हमें ये इंश्योर करना है कि राहुल हमारे पेज पे आए और वो बाई करके जाएं. That's how the copy, that's how the marketing has to be done, right? And once that is done, then what I am going to do next is I am going to target my every single person who is similar to Rahul, right? And there will be, tons of people out there. We live in a world with more than 8 billion people, right? So then we are going to find out so many people who are going to be having a similar kind of age, similar kind of problem, personality, similar problem, similar struggle, similar goal, similar stuffs, right? So the first thing is setting up your ideal customer avatar with respect to your business, right? So the first thing is you would be coming up with the product and then your ideal customer. Yeah, 1 second, let me write it down. Your product, let me make it green. Okay, let me change the color. Product, you come up with the product, and then you and then your ideal customer, okay, to whom you are going to sell. Is your product a right fit for them with respect to your ideal customer avatar? Have a complete idea about your ideal customer avatar who is going to be your customer. Add once you have it. उसके बाद तब जाके आपको मार्केटिंग करनी है, तब जाके आप फॉरवर्ड मूव करेंगे मार्केटिंग के लिए. just like you know with your salon, करेक्ट. जैसा कि सैलून शॉप में था, है ना, कभी भी हम स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं कि उस लोकेशन में उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितने लोग आ रहे हैं, क्या वहाँ पे लोग हैं भी कि नहीं है, राइट? ये हम देखते थे सैलून शॉप के लिए. In the same manner, in your online marketing, you need to understand all these things. Okay? So, you need to know who is your ideal customer before starting anything. You need to know who is your ideal customer, and then we will go ahead with the actual start doing marketing. Alright? So, this is the first lesson, and this is the lesson for ideal customer avatar, and I'll see you in the next one. Alright, so yeah,